Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 21st of August. The session will be quite interesting and important students, so stay tuned with us till the end. In this video we are talking about cabinet approvals. Then we will be talking about Ministry of Power. They are planning to develop a 97 gigawatt of coal-fired power capacity by FY35. Then we will be talking about a 62,000 crore rupees deal that has been signed to purchase 97 Tejas Mark 1A jets from Hindustan Aeronautics Limited. And then we will be talking about a nationwide rollout of IT 2.0 APT. What is this? We will be discussing in this video. If you are new here students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relative, neighbors, and let them know about this interesting platform. One more thing students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning on regular basis. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs. First, we are talking about cabinet approvals. First, moving on students, remember these cabinet approvals, these are important. That is a 6-lane access controlled capital region ring road that has been approved by CCEA, the cabinet committee chaired by Prime Minister Narendra Modi, right? And it is for the construction of a 6-lane access controlled capital region ring road, that is Bhubaneswar bypass in Odisha, on hybrid annuity mode. The total cost here will be 8,307 crore rupees, and the length of the corridor is expected almost 110.875 kilometers. Then next is your greenfield airport at Kota Bundi, right? That is in Rajasthan. The project cost here is 1,507 crore rupees. Then third thing is greenfield airport at Kota Bundi. We just saw this is the second, right? So take a note of this. Moving on, if we talk about Airport Authority of India students, right? Who is the chairman of Airport Authority of India? Vipin Kumar. Headquarter in New Delhi. Next is Ministry of Power. They are planning to develop a 97 gigawatt of coal-fired power capacity by FY 2035, right? Take a note of this, right? This is from their previous target of 90 gigawatt that was for FY 2032. Now it has been extended to 97 gigawatt by FY 35. The upward revision of the target will help in achieving the required 307 gigawatt of thermal that will come from coal and lignite installed capacity by 2035. Also, this expansion will help in realizing India's ambition target of achieving 500 gigawatt of renewable energy capacity by 2030. See students, as the population increases, as a country becomes a developed nation, the amount of energy required to sustain daily operations will also increase. And even now we are seeing that AI is coming into the picture. The servers on which the AI is running, they also require heavy amount of water, right, to keep them cooled, right, for other purposes, correct? So electricity demand will be increasing in the coming time, and we need to fulfill that demand. And one of the one way is that we increase the renewable energy capacity, and second is to increase the traditional capacity here, right? So take a note of this. Union Minister Shripad Yeso Naik, the Union Minister of Power, in a written response to the query in Rajya Sabha, right, has informed the Government of India that they have revised their target to develop additional 97 gigawatt of coal and lignite based electricity generation by FY 35, right? So 97 gigawatt, right, and target FY 35. Earlier target was 90 gigawatt by FY 32. Moving on, next is CCS. What is CCS? CCS is your Cabinet Committee on Security. They have approved 62,000 crore rupees deal to purchase 97 Tejas Mark 1A jets from Hindustan Aeronautics Limited. This is your Tejas Mark 1A fighter jet, right? What is the total cost here? 62,000 crore rupees. It will be procured by whom? From Hindustan Aeronautics Limited. And the indigenous content here is of 65%. That means 65% of the material used here is for
indigenous, that it will be sourced from India and made in India. It will be delivered to Indian Air Force. Correct. Also remember the Tejas aircraft was first flight tested in the year 2016. Next, if we talk about Hindustan Aeronautics Limited, who is the chairman and managing director here? Dr. T.K. Sunil. And headquartered in Bengaluru, Karnataka, established in 1940. Next is Union Minister Jyotiraditya Scindia has announced a nationwide rollout of IT 2.0 APT. APT is your Advanced Postal Technology. So Jyotiraditya M. Scindia, our Union Minister of Communication, officially announced the nationwide rollout of APT by Indian Post or the Department of Post. A 5,800 crore rupees project under the India's IT program, building on the Project 1.0, enabling faster, smarter and customer-centric postal services. Correct? Take a note of this. So what we are talking about, nationwide rollout of IT 2.0 APT by Indian Post, announced by Jyotiraditya Scindia ji. Investment cost 5,800 crore rupees, and this is developed by CEPT under the Department of Post, hosted on the Meghraj 2.0 cloud platform. Correct? And this cloud platform is of Government of India. Next is IIT Madras and FedEx. They have launched a smart center for artificial intelligence driven logistics solution. I repeat, IIT Madras, they in collaboration with American transport company FedEx, they have launched FedEx Smart Center, that is supply chain modeling, algorithms, research and technology center at IIT Madras campus in Chennai, Tamil Nadu. This newly launched center, it aims to develop sustainable AI driven logistic solutions. See, AI when it is coming into the picture, right? How this AI will be a game changer, because less number of people will be required to do that job, and automation will be coming into play with the help of AI. And in the logistic solutions, a certain automation will be beneficial in order to enhance their revenue. Correct? So we are talking about this partnership between IIT Madras and FedEx, where they have come up with this smart center for AI driven logistics solution, where various research and development will be done in order to provide better solutions that how we can improve the logistics. Here the partnership will be for the next 5 years, and financial support of almost 44 crore rupees or $5 million will be provided. Next is Centum Electronics. They have partnered with Bharat Electronics Limited for Advanced Defense Electronics Project. I repeat, Bengaluru, Karnataka based Centum Electronics Limited, they have signed this MOU with Bharat Electronics Limited, a defense PSU under the Ministry of Defense, to work together in the field of defense electronics. Next, banking and finance students, Exim Bank, that is your Export and Import Bank of India, they have recently signed a $40 million credit line deal with Africa's ECOWAS. What is this ECOWAS? Right? This is Africa-based ECOWAS Bank for Investment and Development. Right? This is the financial arm for the Economic Community of West African States. Right? This ECOWAS, that is Economic Community of West African State. This will support the development projects across across Africa. This $40 million, right? So this $40 million will be used, in simple terms, we say this $40 million, right? This is a line of credit that will be used for the various development projects in Africa. Right? Take a note of this. Who granted them this line of credit? Exim Bank. How much line of credit? $40 million granted to Africa's ECOWAS. For what reason? For the development projects in Africa. Next is Punjab National Bank. They became the first public sector bank in India to migrate to .bank.in domain. Right? This move is in line with the RBI's guideline that mentioned that now the banks need to move to .bank.in domain, issued in April 2025. Right? What is the main purpose here? That this will enhance the cyber security and prevent frauds. Correct? And this .bank.in internet domain is reserved specifically for the Indian banks only. Next is economy and business. ICRA projected India's GDP growth at 6.7% for the first quarter of FY26. Right? And this is supported by high government spending and robust export performance. This growth is projected is higher than RBI's forecast of 6.5% through a lower than 7.4% recorded in the fourth quarter of FY25. If we talk about the gross value added, here ICRA, they further projected that the GBA growth
will decrease from 6.8% in the fourth quarter to 6.4% in the first quarter of FY26. If we talk about the capex, that is the center's gross capital expenditure surged by 52% year on year to 2.8 trillion rupees in the first quarter of 26. So in simple terms, remember, if we talk about industry sector, 4% growth will be there. In agriculture, 4.5% growth. In service sector, 8.3% growth we will be seeing. And as a whole, 6.7% will be seeing as the growth according to ICRA. Next is Indian Oil and Air India. They have signed a memorandum of understanding for SAF supply. What is this SAF? Sustainable Aviation Fuel, right? So we are talking about Indian Oil, correct? Indian Oil, they have partnered with whom? They partnered with Air India for the supply of sustainable aviation fuel, correct? Take a note of this. Moving on, next is Suzlon. It became the first Indian energy firm to join RE100 initiative that commits to 100% renewable energy. I repeat, Pune, Maharashtra based the Suzlon group, they have taken a major step in clean energy by joining the Renewable Energy 100 initiative by becoming the first Indian company from the energy sector to do this, correct? So it is to commit 100% renewable energy by 2030. This is the first Indian energy firm to join this, right? RE100 initiative, correct? And also under this pledge, Suzlon, they are planning to power all their 15 factories only with the renewable energies by 2030. Next students, next we are talking about CCI approvals on 19th of August. Like first approval that you need to remember is 100% stake of Skechers of USA by 3G Capital. Then second approval is shares of MLSPL by Platinum Jasmine A 2018 Trust. Then 49% share of ISMDPL by PML or for 5,449 crore rupees. And fourth approval is share of the QGSPL by CA Plume Investment and Bequest Incorporation. Here you can see what we are talking about, right? You got the idea. Now Skechers USA by 3G Capital, it has been acquired, 100% acquisition is there. Then for MLSPL, that is your Micro Life Sciences Private Limited, right? In them, they have been acquired by Platina Jasmine A 2018 Trust, acting through their trustee Platina All C 2018 RSC Limited. Then next is acquisition of Island Star Mall Developers by the Phoenix Mills, and the acquisition of equity in QGSPL, that is your certain shareholding of QGSPL by the CA Plume Investment, that is an investment vehicle linked to the Carroll Group and Bequest Incorporation, right? So these are the four approvals that you need to remember. Moving on to important days, Sadbhavna Divas observed on 20th of August. This day is observed basically to raise awareness about, right, about promoting peace, harmony, unity, and among various religious and communities, right? This day also marks the birth anniversary of the former Prime Minister Rajiv Gandhi ji, as you can see him in the picture here, right? And on 20th of August, it was the 81st birth anniversary of Rajiv Gandhi, right? Then Sadbhavna Divas was first observed on 20th of August in 1992 in memory of Rajiv Gandhi, who was assassinated in 1991. This word Sadbhavna, it translates to goodwill and bona fide in English, right? Next is World Mosquito Day, observed on 20th of August. This day is observed basically to raise awareness about that mosquito bite. It translates to malaria and it translates to other disease, dengue, that is harmful and can be deadly for humans, right? And female Anopheles mosquito, it carries the virus that causes malaria in humans, correct? So hence World Mosquito Day observed on 20th of August, and this day is observed on the birth anniversary of Sir Ronald Ross, right? Take a note of this, important question students, right? And he received the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1902, correct? And he discovered this malaria in 1897. Next is state news students. Delhi government to launch Delhi Mitra application. This is a unified integrated public grievance redressal system, right? So Delhi government, they have launched the Delhi Mitra application, right? It is a unified integrated system, that is your public grievance redressal system. This will register complaints that are related
to Delhi government, police, right, and etc. Correct? Take a note of this. So that's all for the day. Now let's move to the revision part that will be quite beneficial for your learning. Identify the aerospace company that collaborated with Infostellar of Japan in March 25 to integrate a 3.8 meter SNX band ground station antenna in Hyderabad into Infostellar's Stellar Station platform. So which is that aerospace company? It is Dhruva Aerospace Private Limited. Next, which company in India recently signed a $253.6 million agreement with Hanwha Aerospace Company Limited of South Korea to export components of K9 Vajra T to the Indian Army. K9 Vajra T, this is a tank. Right, so its component will be delivered to the Indian Army. Which company has partnered here and signed this agreement with Hanwha Aerospace Company worth $253.6 million? It is L&T Tubro, that is Larsen and Tubro Limited. Next, in April, Indian Army and DRDO, they successfully carried out 4 flight tests of the Army version of the medium-range surface-to-air missile system from the coast of Odisha. Next, which Indian private aerospace manufacturer conducted the static fire test of Kalam 100 engine, the third stage of the Vikram 1 launch vehicle in Nagpur, Maharashtra? It is Skyroot Aerospace Private Limited. Right, take a note of this. And this Vikram 1, it is India's first private commercial orbital launch vehicle designed to carry up to 480 kilograms of payload to a 500 kilometer into the low Earth orbit. And it has been named after Dr. Vikram Sarabhai, the father of India's space program. Next is identify the name of the launch vehicle for which Solar Defense and Aerospace Limited, that is a subsidiary of Solar Industries India Limited, had successfully developed the propulsion system including the igniter and third stage rocket motor. So name that launch vehicle. It is Vikram 1 satellite. Next, mention the Russian aircraft which carried NASA's astronaut Jonathan Yong-John Kim and Roscosmos cosmonaut Sergei Viktorovich and Alexei Vitalyevich to the International Space Station in April 2025. So recently the rocket that was used here is Soyuz MS-27. This is the rocket that was used here. Next, name the long-range glide bomb successfully tested by DRDO using the Sukhoi 30 Mark 1 fighter jet in April 2025. It is Gaurav. Right, this is the long-range glide bomb, the name of which is Gaurav. Next, mention the state where DRDO successfully conducted the field trial of the land version of the vehicle-mounted Mark 2A laser-directed energy weapon. So, which is that state? It is Andhra Pradesh. Take a note of it. And with this, our country, India, we became the 4th country to have such kind of a system after USA, Russia, and China. Next, pop star Katy Perry and 5 other women were launched into space and returned to Earth using the New Shepard rocket. Name the company that carried out this mission. It is Blue Origin that carried out this mission. So total of 6 women went into space through their first space trip with only women, right? Next, identify the company that in April 2025 successfully conducted preliminary sea trials of 651 kilowatt water jet propulsion system for the Indian Navy under TDF, that is Technology Development Fund scheme of the DRDO. So which is that company? It is L&T, Larsen and Tubro. Next, Betavolt Technology Company Limited based in Dash unveiled a nuclear powered battery named BV100 capable of operating for up to 50 years on a single charge. So Betavolt Technology Company Limited, that is based in China, right? They have unveiled a nuclear powered battery that has been named BV100, which is capable of operating up to 50 years on a single charge. Next, in April 2025, Google, they have launched the 7th generation AI name chip, that is Ironwood. It is designed to accelerate AI applications involving rapid calculations to generate responses in AI powered systems. Next, in April, India commemorated the golden jubilee of the first satellite Aryabhatta, marking 50 years since its launch on 19th of April 1975. At that time, satellite was launched abroad Dash rocket from Kapustin Yar
in Russia with assistance from Soviet Union, that is USSR. So question asked is that at the time this satellite, right, Aryabhatta was launched using Cosmos 3M rocket, and it was launched from Russia, right, and it was 1975 when this Aryabhatta was launched on 19th of April. Next, in April, ISRO they successfully developed and tested an indigenously made nozzle divergent using satellite alloy for the fourth stage of which launch vehicle? It is PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. Next, in April, which country launched the fourth indigenous military spy satellite using Falcon 9 rocket of SpaceX from Florida, USA, to strengthen their independent surveillance capabilities? It is South Korea. Next, in April, India dispatched the second batch of supersonic cruise missiles to Philippines under $375 million deal signed in 2022. Name the Indian-Russian joint venture company involved in this agreement. It is BrahMos Aerospace Private Limited. And also remember, Philippines is the first nation to buy these BrahMos supersonic cruise missiles from India, right? And this deal was signed worth $375 million. Next, China has achieved a milestone in their internet infrastructure by launching the world's first 10G broadband network in its Sunan County in Hebei province. Next is identify the INS, that is Indian naval ship that successfully test fired the medium range surface to air missile also known as Barak 8 in the Arabian Sea. It is INS Surat. Next, which organization conducted 1000-second ground test of an active cooled scramjet subscale combustor in April, marking a critical advancement in India's hypersonic cruise missile development program? Which is this INS, or which organization conducted it? It was conducted by DRDO, Defense Research and Development Organization, right? Take a note of it. Next, name the second generation geostationary orbit data relay satellite launched by China in April using the Long March 3B rocket from the Shenzhen Satellite Launch Center in southwest China. It is Tianlin 2. This is the name of the second generation geostationary orbit satellite. Next, in April, Amazon Incorporation they successfully launched the first 27 satellites of its Project Kuiper broadband internet constellation from Florida. See this Project Kuiper, it is of Amazon, right? And Starlink is the project of SpaceX, that is of Elon Musk. OneWeb is also launching their own constellation. Tell me, OneWeb is the constellation of which organization or country? This is your homework, right? So these were your important current affairs, students. Now let's move to the revision part. So the right option is Lao People's Democratic Republic. The grant will support the project that we just mentioned here. Take a note of it. Next, mention the bank that recently launched a pilot project for a merchant loyalty or cashback program using programmable CBDC through the Bob Merchant application. This Bob Merchant, this is your Bank of Baroda. So straight away the right option is Bank of Baroda. Correct? So they have launched a pilot project for a merchant loyalty and cashback program where cashback will be provided in the form of a digital currency on their BOB merchant application. Next, bilateral swap agreement up to dash was signed between the Reserve Bank of India and Bank of Japan to enhance financial cooperation. So this bank swap agreement worth $75 billion was signed between RBI and Bank of Japan. Next, in February, SEBI they have introduced a new framework for specialized investment fund SIF to address the gaps between mutual funds and portfolio management services in terms of the portfolio flexibility. Question asked is from which date will the new framework come into effect? It will be coming into effect from 1st of April 2025. Next, identify the new term deposit product launched by Federal Banks Limited to provide stable income for a period of 5 to 20 years for resident customers. It is annuity deposit. Correct. Customers have the flexibility to select their preferred payout frequency, that is monthly or quarterly or half yearly or annually, which each payout consisting of both primary, principal and interest earned.
Next, S&P Global, they have released S&P Global Corporate Sustainability Assessment 2024 and the Carbon Disclosure Project, making Carbon Disclosure Project ranking in Feb 2025. Question asked is, which private sector bank in India was recognized as the highest rated bank in sustainability? It is Yes Bank. Next, in Feb, HDFC Bank Limited became the first domestic bank to trade 5 kilograms of gold on what? On Indian Bullion Exchange. Indian International Bullion Exchange. Next, Paytm partnered with which organization? They partnered with RBL Bank Limited to provide sound boxes and card machines to their merchants for easier and more efficient transactions. Next, in March, SEBI, they have permitted all NBFCs, including HDFC, including your housing finance companies, to invest in security receipts, that are your SRs, that are issued by the asset reconstruction companies. Next, mention the insurance company that recently launched child-focused insurance product, that is Smart Future Star and Smart Platina Young Achiever, to provide financial security for children, education and future expenses. It is SBI Life Insurance Company Limited. This is the company that have launched the child-focused insurance product, that is Smart Future Star and Smart Platina Young Achiever plan. Next, which private sector bank in India launched the Project Hawk, that is Hawaii Anubhavi Kalyan Kendra, serving those who have served, right? This is the name of the project. It was launched in March 25 to support the Indian Air Force pensioners, veterans and their families. Which is that bank? It is HDFC Bank Limited. Next, mention the health insurance company that launched the RISE health insurance plan in March, aimed at catering to the healthcare needs of the India's missing middle class. Right? So, which is that health insurance company? It is Niva Bupa Health Insurance Company Limited. Next is Bank of Baroda. They have introduced BOB Global Women NRE and NRO saving account designed exclusively for the women NRIs. Question is, what does the letter O stands for? NRO. That is your non-resident ordinary. Right? Take a note of this. Next, identify the public sector bank that collaborated with Indian Army to extend Rakshak salary package to Army personals, veterans and Agniveers under the Agnipath scheme. Question asked is, which is that public sector bank? It is Bank of India. BOI. Next, name the company that received $1.1 million in seed funding in March 2025 from Unleashed Capital Partners and CDM Capital to strengthen their technology and enhance debt recovery process. It is your CRED Resolution India Private Limited. Next, as per SEBI's new regulations for SME initial public offerings that was announced in March 25, what is the maximum allowed percentage for the offer for sale portion of the total IPO size? So, what is the maximum allowed offer for sale portion here? What it will be? It will be 20%. Next, identify the private sector bank that collaborated with Indian Army's Directorate of Indian Army Veterans and Common Service Centers to expand Project Naman, that is aimed at supporting Army veterans and their families. Right? So, which is that private sector bank? It is HDFC Bank Limited. It will be in two phases that started from September 23 and the second phase just now started in March 2025. Next, Kuhu Finance, backed by Westbridge Capital, they have secured the RBI license to function as a non-banking finance company, that is NBFC, that will enable it to offer student loans of up to 2 crore rupees. Next, name the institution that collaborated with Canara HSBC Life Insurance to offer credit life insurance solutions to home loan borrowers. It is GIC Housing Finance Limited. Next, in March, RBI and Dash jointly launched nationwide campaign to enhance financial security in India. It is National Center for Financial Education. Next, RBI, as per RBI's new framework for SROs, that is self-regulatory organizations in account aggregator ecosystem, what is the minimum net worth required within 1 year of the recognition of them as SRO? That is your 2 crore rupees. This is the minimum net worth requirement here. And this account aggregator system, this provides secure exchange of financial data between FIUs and FIPs.
and it was initiated in 2016. Next, identify the company that became the first private sector reinsurer in India after receiving R2 license from IRDAI. Which is that company? It is Value Ethics Reinsurance Company Limited. This is the first private reinsurer in India. Next, Brisk Payment Exchange, that is Brisk Pay, they have received in principle approval from RBI in March to act as a payment aggregator for dash transactions under Payment and Settlement Act of 2007. It is your payments aggregator for cross border, right? One is your payment aggregator, one is your payment aggregator cross border. This is within the international countries, right? You can transfer within different parts of the world. Payment aggregator is just for nation, right? Within the country, within the states, you can make transactions. Next, in March, RBI imposed a monetary penalty of JM Financial Products Limited for non-compliance with NBFC regulations. What was the monetary penalty imposed on GMFL? It was 3.1 lakh rupees. Next, identify the public sector bank that entered into a strategic co-lending partnership with Piramal House Capital and Housing Finance Limited in March to boost credit access for underserved rural and semi-urban regions in India. This will be your Punjab and Sindh Bank. Next, what is the revised timeline set by SEBI in March 25 for completing right issues effective from 7th of April 2025? It is 23 days. Next is in March, RBI signed a memorandum of understanding with Bank of Mauritius, right, to promote the use of local currencies for cross-border transactions. Correct? Take a note of this. This will enhance the bilateral trade between India and Mauritius. Next, identify the digital platform that collaborated with SBI Mutual Fund to launch Jan Nivesh, a 250 rupees SIP initiative that is aimed at promoting small ticket investments in India. This is your Paytm. Next, Paytm Money Limited, they received the certificate of registration from SEBI under which category? It was under research analyst category. Right option is option third. Next is identify the program launched by the Asian Development Bank on 17th of March to enhance local capital markets, boost entrepreneurship and support sustainable economic growth in the Pacific markets. So which is that program? It is your Frontier Seed program. This is an initiative to provide funding and technical assistance to businesses with potential that is transformative. Next is name the digital platform that partnered with SEBI in March to help address the issue of unclaimed assets in the securities market. It is your DigiLocker that has partnered with SEBI here for this initiative. Then next is what is the revised minimum investment threshold for zero coupon, zero principal instruments on social stock exchange set by SEBI in March to make it more affordable for small investors. So it is 1000 rupees minimum investment threshold for zero coupon, zero principal. Next, what is the which of the following individuals was not appointed as a member of the IAC, that is Insurance Advisory Committee by IRDAI? So Sanjeev Sanyal was not appointed here. Next, name the mobile application launched by Bank of Baroda for corporate customers using Baroda Cash Management Service. It is Baroda M DigiNext. Next is how much penalty that the RBI imposed on IDBI Bank in March for violating the rules under Foreign Exchange Management Act of 1999. This is 36.3 lakh rupees. Right, so on IDBI it is 36.3 lakh rupees and on Citibank it is 30.28 lakh rupees. Next, that's all for the day, students. Now let's move to the revision part that will be beneficial for your learning, and then we'll proceed to the another section of the video, and we will be starting with these are your March current affairs. Right, now we will be starting with the April current affairs from tomorrow onwards. Now students, let's move to the homework section. First question is, tell me who has been reappointed as the CBDT chairman, and this extension is for 1 year. Second question, tell me recently who has been appointed as the managing director for Bajaj Consumer Care. Third question, who has been appointed as the brand ambassador for the World Para Athletics Championship that will be in New Delhi. Fourth question, who has been appointed as the new Chief Executive Officer of UGRO
capital. And fifth question, students, tell me recently when do we observed MSME day and the addition of it. So these are your 5 homework questions, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. Also tell me, students, recently XAI, they have launched the new version of the Grok. What is this Grok and what is the new version we are talking about? Tell me about this also. This is also your homework section, right? So that's all for the day. Thank you and have a nice day. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 21 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में हम कैबिनेट अप्रूवल्स की बात करेंगे। देन हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यहाँ पे प्लान डेवलप किया है 97 गीगावाट का कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी को अचीव करने के लिए बाय FY35। देन CCS ने अप्रूव किया 62,000 करोड़ की डील टू परचेज 97 तेजस मार्क 1A जेट्स फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देन हम बात करेंगे नेशन वाइड रोल आउट ऑफ I2 2.0 APT। इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब करना, शेयर कर दो इस वीडियो को। एंड ये वीडियोस हम सुबह 5 बजे डेली बेसिस पे अपलोड करते हैं स्टूडेंट, जिससे आपकी लर्निंग और बेहतर हो सके। क्योंकि इस कंटेंट में, इन वीडियोस में जो हम कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं वो काफ़ी रिफाइंड होता है एंड केटर करता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस को। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। कैबिनेट अप्रूवल्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहला अप्रूवल आ जाता है 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड कैपिटल रीजन रिंग रोड। 6 लेन का है, ये इंपॉर्टेंट है, ओडिशा में ये रहेगा। इसको भुवनेश्वर बाईपास के नाम से भी जानते हैं। 8307 करोड़ की यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी। 2.5 ईयर्स लगेंगे इसको बनाने में एंड 110 किलोमीटर के लगभग ये प्रोजेक्ट की लेंथ रहेगी। फिर आ जाते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट कोटा बूंदी। ये आपका बेसिकली राजस्थान में रहेगा। 1507 करोड़ की लागत रहेगी यहाँ पे एंड 2 साल लगेंगे इसको भी बनाने में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन आ जाते हैं विपिन कुमार। विपिन कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली में। 1995 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। इसके बाद बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये प्लान कर रहे हैं 97 गीगावाट ऑफ कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी को जनरेट करने के लिए बाय FY35। पहले जो टारगेट था वो 90 गीगावाट का था, राइट, बाय 2030, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके 97 गीगावाट कर दिया है अब, और उसको ईयर भी 2035 कर दिया है, राइट। यहाँ पे हम इंडिया का एक और टारगेट है कि 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को हम अचीव कर सकें बाय 2030 एंड नेट जीरो टारगेट हम अचीव कर सकें बाय 2070, राइट स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं CCS के कैबिनेट कमिटी ऑन या कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। इसको चेयर किया जाता है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने अभी अप्रूव किया 97 तेजस मार्क 1A जेट्स को प्रोक्योर करने की बात की गई। यहाँ पे एक ऑर्डर है, हॉल से हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से इसे एक्वायर किए जाएंगे एंड 62,000 करोड़ रुपीस की ये डील हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर 65% कंटेंट इंडिजीनियस है, मतलब इसमें जो भी प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, जो भी पार्ट्स यूज हो रहे हैं, 65% ऑफ देम वो इंडिया में ही सोर्स किए जा रहे हैं। कॉस्ट याद रखेंगे 62,000 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने अनाउंस किया नेशन वाइड रोल आउट ऑफ IT 2.0 APT। ये क्या है? नेशन वाइड रोल ऑफ एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी बाय द इंडियन पोस्ट, राइट। एंड ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई। 5,800 करोड़ का प्रोजेक्ट रहेगा अंडर इंडियाज IT प्रोग्राम 2.0, जो कि प्रोजेक्ट 1.0 पे बना है, जो एनेबल करता है फास्टर, स्मार्टर एंड कस्टमर सेंट्रिक पोस्टल सर्विसेज को। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स
आईआईटी मद्रास एंड फेडेक्स इनके द्वारा स्मार्ट सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन लॉजिस्टिक सॉल्यूशन यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये स्मार्ट क्या है? सप्लाई चेन मॉडलिंग, एल्गोरिदम, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। अब देखो इससे होगा क्या, एक तो एआई की मदद से हम लॉजिस्टिक सेक्टर को बेटर करेंगे, यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती हुई दिखेगी, बेटर फ्रेमवर्क्स बनाए जाएंगे, बेटर आपकी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा कि कैसे हम बेटर यूज़ केसेस से जो लॉजिस्टिक्स है उसको और ज़्यादा हम किफ़ायती बना सकें और ज़्यादा हम उसको बेटर बना सकें। इसीलिए फेडेक्स स्मार्ट सेंटर लॉन्च किया गया। आईआईटी मद्रास एंड फेडेक्स ने पार्टनर किया। कहाँ पर? आईआईटी मद्रास के कैंपस में इन चेन्नई तमिलनाडु। एंड यहाँ पे सस्टेनेबल एआई ड्रिवन लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस लाने की बात की जाएगी। $5 मिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर हम बोले 44 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है आने वाले 5 सालों के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। इन्होंने पार्टनर किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ फॉर द एडवांस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, राइट। तो किसके साथ? सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये एक अग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने $400 मिलियन की क्रेडिट लाइन डील साइन करी अफ्रीका के इकोवास के साथ। ये क्या है? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ये जो $40 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कराई गई ना, इससे होगा क्या? अफ्रीका रीजन में जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको फंड करने के लिए ये $40 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं पीएनबी बैंक। ये वो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया जिन्होंने अपना डोमेन माइग्रेट कर लिया है टू .bank.in, राइट। ये आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस दी गई थी अप्रैल के महीने में कि सभी बैंक्स को अब .bank.in डोमेन पे स्विच करना है। इससे होगा क्या? सिक्योरिटी बेटर होगी एंड जो आपके फ्रॉड्स होते हैं, जो फिशिंग अटैक्स होते हैं, वो कम होते हुए दिखेंगे इस .bank.in डोमेन से। नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस पर। आईसीआरए, इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, राइट। इनके द्वारा इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट की गई है कितनी परसेंट? 6.7% फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मार्क करके चलेंगे इसको। इसी में याद रखेंगे 6.7 प्रोजेक्ट की जा रही है फॉर फर्स्ट क्वार्टर। अगर मैं ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करूं, ये 6.4 प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वहीं पे अगर सेक्टर वाइज हम ग्रोथ देखें तो 4% इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर 4.5, सर्विस सेक्टर 8.3% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन ऑयल एंड एयर इंडिया। इन्होंने एक MOU साइन किया है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये मार्क करके चलेंगे। किन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक MOU साइन हुआ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए? वो है इंडियन ऑयल एंड एयर इंडिया। नेक्स्ट सुजलॉन, ये वो पहली इंडियन एनर्जी फर्म बन गई जिन्होंने ज्वाइन किया रिन्यूएबल एनर्जी 100 इनिशिएटिव को, जो कमिट करते हैं कि हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करेंगे इन कमिंग ईयर्स, राइट। सो इससे होगा क्या? ये RE100 बेसिकली है क्या? ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी सारे लीडिंग बिजनेसेस को साथ में लाता है ताकि वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर सकें एंड उसको अडॉप्ट कर सकें। एंड मोर देन 400 कंपनीज पार्ट हैं आपके रिन्यूएबल एनर्जी 100 एंड सुजलॉन ने अभी इस नेटवर्क को ज्वाइन किया एंड 100% ग्रीन फ्यूचर की तरफ ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस प्लेज से क्या होगा? सुजलॉन प्लान कर रहा है कि इनकी जो 15 फैक्ट्रीज हैं अब वो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करें बाय 2030। ये ट्रांजिशन होता हुआ हमें दिखेगा। नेक्स्ट CCI अप्रूवल्स की बात करें तो मैं आपको डायरेक्ट अप्रूवल्स ही दिखा देता हूं स्टूडेंट्स। ये वो 4 अप्रूवल्स हैं जो आप मार्क करके चलो। पूछे जाएंगे कि स्केचर्स USA का 100% स्टेक किसने बाय किया? 3G कैपिटल ने। देन शेयर्स ऑफ MLSPL बाय प्लेटिना जैस्मीन A 2018 ट्रस्ट में। देन शेयर्स ऑफ QGSPL, राइट, ये CA प्लूम इन्वेस्टमेंट एंड बीक्वेस्ट इनकॉर्पोरेशन के द्वारा एक्वायर करे जाएंगे। तो ये कुछ आपको अप्रूवल्स हैं, पता होने चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट डेज पे आ जाते हैं, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी, राइट। एंड इनकी बर्थ एनिवर्सरी को जो कि 20 अगस्त को होती है हम ऑब्जर्व करते हैं सद्भावना दिवस। हर साल ऑब्जर्व किया जाता है पीस, यूनिटी, हार्मनी को प्रमोट करने के लिए अमंग डिफरेंट रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज इन इंडिया। तो ये बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है किनकी? राजीव गांधी जी की। एंड 81st बर्थ एनिवर्सरी इस बार हमने देखने को मिली 2025 में, करेक्ट। यहीं पे राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड से भी लोगों को सम्मानित किया जाता है। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद
वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है एंड मॉस्किटो से जो डिजीज़ होती हैं, डेडली डिजीज़ होती हैं, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें मॉस्किटो, राइट, मॉस्किटो से आपका डेंगू होगा, मलेरिया होगा, काफ़ी डेडली डिजीज़ है, राइट। मॉस्किटो के अगर मलेरिया की मैं बात करूँ तो मलेरिया किससे होता है? एनोफ्लीज मॉस्किटो के बाइट से होता है, राइट, फीमेल मॉस्किटो की बाइट से होता है। तो ये काफ़ी डेडली हो जाती है, इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि सर रोनाल्ड रॉस इनके द्वारा 1897 में पता लगाया गया था अबाउट दीज डिजीज, राइट, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। एंड नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन 1902 में। मूविंग ऑन टू स्टेट न्यूज स्टूडेंट्स, दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया दिल्ली मित्र एप्लीकेशन को। ये दिल्ली मित्र एप्लीकेशन रेखा गुप्ता जो कि चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, उनके द्वारा लॉन्च की गई थी। दिल्ली मित्रा ये आपका बेसिकली एक पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम रहेगा, जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। एंड ये जो सिस्टम रहेगा बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट, पुलिस, राइट, इनसे रिलेटेड जो कंप्लेंट है वो यहाँ पर रजिस्टर होती हुई हमें दिखेंगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द CBDT chairman and this extension is for 1 year. Second question, tell me recently who has been appointed as the managing director for Bajaj Consumer Care. Third question, who has been appointed as the brand ambassador for the World Para Athletics Championship that will be in New Delhi. Fourth question, who has been appointed as the new Chief Executive Officer of Ugrow Capital. And fifth question students, tell me recently when do we observed MSME Day and the addition of it. So these are your 5 homework questions students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. Also tell me students, recently XAI they have launched the new version of the Grok. What is this Grok and what is the new version we are talking about? Tell me about this also. This is also your homework section, right? So that's all for the day. Thank you and have a nice day. नेक्स्ट है मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फॉर एंड इन द गोल्ड कैटेगरी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट दैट इज हिंदू हृदय स्मृत बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। तो क्वेश्चन पूछा गया किस ऑर्गेनाइजेशन को सम्मानित किया गया यहाँ पे, तो महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने 4 गोल्ड मेडल सिक्योर करे अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज इन अप्रैल एट द इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑलिव क्राउन अवार्ड्स, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हमें देखने को मिला। तो ये रहेगा अडानी ग्रुप। फिर आ जाते हैं हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर्स अवार्ड फॉर हिज एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर बाय द मेयर ऑफ वेमाउथ क्लर्क जॉन ऑरल, राइट। ये सैंड मास्टर है, काफ़ी फेमस सैंड मास्टर है, ये है सुदर्शन पटनायक, राइट। एंड इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हु रिसीव्ड द नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड, जो कि हाईएस्ट इंडिविजुअल ऑनर है इंडिया के मैरीटाइम सेक्टर में 62वें नेशनल मैरीटाइम डे के दौरान, जो कि 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। बताओ कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 अप्रैल को 62वां नेशनल मैरीटाइम डे। तो किनको अभी यहाँ पे सम्मानित किया गया नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड से? तो वो है कैप्टन राजेश उन्नी। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया विच अमंग द फॉलोइंग को एज द मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली इन इट्स 2025 इनोवेटर्स लिस्ट। तो यहाँ पे तीनों बैंकों को HSBC होल्डिंग, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों को नहीं, तीनों इंस्टीट्यूशंस को, ऑर्गेनाइजेशंस को। नेक्स्ट, किस कंपनी हैज़ बिन रिकॉग्नाइज एज द स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन 2025 के लिए बाय वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन फॉर द 8th कॉन्सिक्यूटिव ईयर सिंस 2018? तो वो है टाटा स्टील लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट पुलिस ने अभी जीता स्कॉच अवार्ड एट द नेशनल लेवल इन द पुलिस एंड सेफ्टी कैटेगरी फॉर इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन प्रोटोकॉल इन अप्रैल 2025? तो यूपी के द्वारा यहाँ पे अवार्ड जीता गया, यूपी स्टेट पुलिस के द्वारा स्कॉच अवार्ड जीता गया। नेक्स्ट, 11वां एनुअल ब्रेक थ्रू प्राइज हुआ, ऑल्सो नोन एज द ऑस्कर्स ऑफ साइंस। इनको अनाउंस किया गया ब्रेक थ्रू प्राइज फाउंडेशन के द्वारा कैलिफोर्निया USA में। पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द इंडियन यूनिवर्सिटी दैट रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल टीम अवार्डेड द
प्राइज, तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू रहेगी। नेक्स्ट, अभी छठा एडिशन ऑफ नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड NHE अवार्ड्स देखने को मिले 2023 के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ऑर्गेनाइज कराए गए थे। 5 डिफरेंट कैटेगरीज में इनको ऑर्गेनाइज कराया गया था। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द कैटेगरीज इन द नेशनल हाईवेज एक्सीलेंस अवार्ड। तो यहाँ पे अगर हम देखें कौन सा इसका पार्ट नहीं है, ब्लू रेवोल्यूशन यहाँ का पार्ट नहीं रहेगा, बाकी 3 है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर जिनको अभी अवार्ड किया गया नाइटहुड से, किनके द्वारा, ब्रिटिश मोनार्की और कॉमनवेल्थ नेशन के द्वारा फॉर हिज सर्विस टू क्रिकेट। कौन रहेंगे वो? ये हैं किनको सम्मानित किया गया है यहाँ पर, सर जेम्स माइकल एंडरसन को। नेक्स्ट, 2025 की लिस्ट ऑफ द यंग ग्लोबल लीडर्स रिलीज की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अप्रैल 2025 में, जहां पे 7 इंडियंस को लिस्ट किया गया आउट ऑफ द टोटल ऑफ 116 लीडर्स जो इस लिस्ट में आए बिलो द एज ऑफ 40। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग फील्ड्स में उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, जैसे बिजनेस, पॉलिटिक्स, साइंस एंड द आर्ट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इज नॉट फीचर्ड ऑन दिस लिस्ट हियर। तो इनमें से विजय शेखर शर्मा यहाँ पे इस लिस्ट में फीचर्ड नहीं है। नेक्स्ट, इन अप्रैल 5 इंडियन आर्म फोर्स पर्सनल्स को ऑनर किया गया मैग्रेगर मेमोरियल मेडल से फॉर द ईयर 2023-24। इनमें से किन को ऑनर नहीं किया गया है यहाँ पर? अगर यहाँ पर हम देखें, इनमें से कर्नल रणवीर कुमार सक्सेना को सम्मानित नहीं किया गया, बाकी सभी को किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द कतर बेस्ड पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर जिन्होंने अभी 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता। इन्होंने एक फोटो ली मोहम्मद अजौर की, जो कि एक 9 साल का बच्चा है, गाजन बॉय है, गाजा में ये रहता है। इसके दोनों आर्म्स चले गए बिकॉज ऑफ एन इजरायली एयर स्ट्राइक जो कि गाजा में हमें देखने को मिली थी मार्च 2024 में। इनकी फोटो ली जो कि काफ़ी फेमस हो गई एंड इसके लिए इनको 2025 के वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। कौन है ये है समर अबू लॉफ। नेक्स्ट, 2025 एडिशन ऑफ द वाइजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक, इन्होंने रिवील किया 5 वाइजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर को, राइट, फॉर देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। इनमें से वो कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस लिस्ट में से, तो आपके हैरी ब्रूक यहाँ पे नहीं रहेंगे। कौन ऐड होंगे? डैन वॉरेल एंड लियम डॉसन, राइट। तो ये 5 हो गए। अब हैरी ब्रूक यहाँ पे नहीं है, तो हमारा आंसर है हैरी ब्रूक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिपिएंट इज नॉट करेंटली मैच विद रिस्पेक्ट टू देयर कैटेगरी। 36वें गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज के हिसाब से अनाउंस्ड बाय द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन। यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा राइट मैच नहीं है, तो वो है लॉरीन एलन का, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैटेगरी से नहीं है बल्कि पॉल्यूशन एंड वेस्ट कैटेगरी से बिलोंग करती है, पॉल्यूशन एंड वेस्ट कैटेगरी। तो राइट ऑप्शन 5। फिर आ जाते हैं, नेम द इंडियन एयरपोर्ट जिसने रिसीव किया लेवल 5 एक्रेडिटेशन को अंडर द एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम बाय एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल अप्रैल 2025 में। तो वो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द इंडियन फिल्म मेकर जिनको ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर से सम्मानित किया गया, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर 24 अप्रैल 2025 को। तो कौन रहेंगे वो है पायल कपाड़िया। एंड इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट, ग्लोबल मीडिया में या फिर इंडियन मीडिया को या ग्लोबल मीडिया में इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है कल्चर को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया, जो कि फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो अभी रिसेंटली देखें तो श्री मधुसूदन साई जी को, जो कि एक इंडियन स्पिरिचुअल लीडर है, राइट, एंड ह्यूमैनिटेरियन लीडर है, इनको सम्मानित किया गया। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा चुका है 2023 में, एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम को भी 2024 में इससे सम्मानित किया जा चुका है। किस कंपनी ने इंडिया में रिसेंटली साइन किया एक $253.6 मिलियन का अग्रीमेंट विद हानवा एरोस्पेस कंपनी लिमिटेड ऑफ साउथ कोरिया टू एक्सपोर्ट द कंपोनेंट्स ऑफ K9 वाजरा टी टैंक्स टू द इंडियन आर्मी। तो इस टैंक के कंपोनेंट्स को डिलीवर करने के लिए टू इंडिया किस कंपनी ने साइन किया हानवा एरोस्पेस कंपनी के साथ? तो वो है L&T ने यहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन किया। नेक्स्ट, इन अप्रैल इंडियन आर्मी एंड DRDO इन्होंने सक्सेसफुली कैरी आउट कराया 4th फ्लाइट टेस्ट ऑफ द आर्मी वर्जन ऑफ द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ओडिशा, ये टेस्ट करे गए। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किस इंडियन प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर ने कंडक्ट करा स्टैटिक फायर टेस्ट ऑफ कलाम 100 इंजन। ये 3rd स्टेज है विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल का इन नागपुर, महाराष्ट्र। तो ये स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे टेस्ट किया गया स्टैटिक फायर टेस्ट कलाम 100 इंजन का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द लॉन्च व्हीकल
फॉर विच द सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की, इन्होंने सक्सेसफुली डेवलप किया प्रोपल्शन सिस्टम जो इंक्लूड करता है इग्नाइटर को एंड थर्ड स्टेज रॉकेट मोटर को। तो वो है विक्रम 1 सैटेलाइट। नेक्स्ट, उस रशियन एयरक्राफ्ट का नाम बताओ जिसने कैरी किया नासा के एस्ट्रोनॉट को और 2 रशियन कॉस्मोनॉट्स को टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन अप्रैल 2025। तो सोयूज MS-27 ये वो रॉकेट है जिन्होंने एक नासा के एंड 2 रॉसकॉस्मोस के कॉस्मोनॉट्स को ISS पे ये ले गया। नेक्स्ट, नेम द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जिसने सक्सेसफुली जिसको टेस्ट किया गया बाय DRDO यूजिंग सुकोई 30 Mark 1 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट। तो वो है गौरव, ये है वो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब को टेस्ट किसके द्वारा करा गया, DRDO के द्वारा। कौन सी एयरक्राफ्ट की मदद से करा गया, सुकोई 30 Mark 1 फाइटर जेट की मदद से किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट वेयर DRDO इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा फील्ड ट्रायल्स ऑफ द लैंड वर्जन ऑफ द व्हीकल माउंटेड Mark 2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। एंड इंडिया ऐसा 4th कंट्री बन गया है इन द वर्ल्ड जिनके पास अब ये लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, राइट। एंड इसको टेस्ट कहाँ से किया गया था, इसको आंध्र प्रदेश से टेस्ट किया गया, करेक्ट। एंड नाउ USA, रशिया एंड चाइना एंड अब हमारा इंडिया के पास भी ये लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। नेक्स्ट, इन अप्रैल पॉप स्टार कैटी पेरी ये इनके साथ 5 और वीमेन अभी स्पेस में गई थी, राइट। न्यू शेफर्ड रॉकेट की मदद से कौन सी कंपनी इनको ले गई, तो ब्लू ओरिजिन। न्यू शेफर्ड ये आपका ब्लू ओरिजिन का है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने अप्रैल 2025 में सक्सेसफुली कंडक्ट करा प्रिलिमिनरी सी ट्रायल्स ऑफ 651 किलोवाट वाटर जेट प्रोपल्शन सिस्टम को फॉर द इंडियन नेवी अंडर TDF स्कीम ऑफ DRDO। तो किसके द्वारा, L&T के द्वारा करा गया। फिर आ जाते हैं बेटावोल्ट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपकी चाइना में लोकेटेड है। इन्होंने एक न्यूक्लियर पावर्ड बैटरी डेवलप किया जिसका नाम है BV100 जो कि 50 साल तक एक सिंगल चार्ज पे ऑपरेट कर सकेगी। नेक्स्ट, इन अप्रैल डैश लॉन्च द 7th जनरेशन AI चिप जिसका नाम है आयरनवुड। तो ये आयरनवुड गूगल के द्वारा लॉन्च की गई थी जो कि एक AI चिप है। नेक्स्ट, इन अप्रैल इंडिया ने कमेमोरेट किया गोल्डन जुबली ऑफ देयर फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा, राइट। 50 साल पूरे हो गए हैं। 19 अप्रैल 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। रशिया की मदद से इसको लॉन्च किया गया था, रशिया के कॉस्मोस 3M रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था एंड रशिया से ही इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, इन अप्रैल इसरो ने सक्सेसफुली डेवलप किया टेस्ट and tested the indigenously made nozzle divergence using satellite alloy for the 4th stage of which launch vehicle। तो PSLV के लॉन्च व्हीकल के लिए ये टेस्ट किया गया, पोलो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट, अभी अप्रैल में किस कंट्री ने लॉन्च किया अपना 4th इंडिजीनियस मिलिट्री सैटेलाइट को यूजिंग Falcon 9 रॉकेट ऑफ SpaceX। तो साउथ कोरिया ने अपनी ये मिलिट्री स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करी है जो कि 4th स्पाई सैटेलाइट रहेगी। नेक्स्ट, इंडिया ने डिस्पैच किया 2nd बैच ऑफ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू फिलीपींस अंडर $375 मिलियन डील जो कि 2022 में साइन किया गया था। नेम द इंडियन रशियन जॉइंट वेंचर कंपनी जो इस अग्रीमेंट में इन्वॉल्व है। तो वो है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड एंड फिलीपींस वो पहली कंट्री बन गया जो इंपोर्ट करा रही है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट, अभी चाइना ने अचीव किया मेजर माइलस्टोन इन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने 10G यहाँ पे ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लॉन्च किया इन सुनान काउंटी ऑफ हेबेई प्रोविंस। नेक्स्ट, उस इंडियन नेवल शिप को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने टेस्ट फायर किया था मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसको बैराक 8 के नाम से भी जानता है, अरेबियन सी में इसको टेस्ट फायर किया गया था। तो INS सूरत से ये टेस्ट फायर किया गया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने 100 सेकेंड्स ग्राउंड टेस्ट किया ऑफ एन एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर का इन अप्रैल, मेकिंग इट अ क्रिटिकल एडवांसमेंट इन द इंडियाज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो है DRDO। नेक्स्ट, नेम द 2nd जनरेशन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट डाटा रिले सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय चाइना इन अप्रैल अब्रॉड लॉन्ग मार्च 8 3B रॉकेट, राइट, इन फ्रॉम साउथ वेस्ट चाइना। तो Tianling 205 ये वो आपका 2nd जनरेशन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट डाटा रिले सैटेलाइट है। नेक्स्ट है Amazon.com इनकॉर्पोरेशन। इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च की 27 सैटेलाइट्स ऑफ प्रोजेक्ट क्यूपर इन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कॉन्स्टलेशन फ्रॉम फ्लोरिडा USA। ये बेसिकली क्या है, प्रोजेक्ट क्यूपर है, ये सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराने का काम करेंगे सिमिलर टू दैट ऑफ स्टारलिंक।